जस्ट 1 मिनट। अच्छा, जब हम लोग मोस्ट ऑफ यू आर सीकिंग कैनेडियन इमिग्रेशन, कनाडा की इमिग्रेशन के लिए या ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन आपको चाहिए, इमिग्रेशन के लिए एक उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, और वो क्राइटेरिया ये है कि एट बॉटम लाइन यू हैव टू स्कोर 8777, या फिर आपने, अच्छा यहाँ पे ये देखा गया है कि आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स, जो 6 to 7 स्टूडेंट्स हैं, आउट ऑफ 10 जो 7 स्टूडेंट्स हैं, दे आर स्ट्रगलिंग इन राइटिंग मॉड्यूल व्हेन वी टॉक अबाउट स्कोरिंग 7 बैंड. So most of the students, they need, requirement is basically is 7 bands in IELTS writing. This is bottom line requirement. Bottom line requirement is 7 bands in IELTS writing. So what we need to do, अगर आपको 7 बैंड चाहिए तो उसके लिए आपका टारगेट क्या होगा? टारगेट वुड बी 8 or 8.5, or it is better if 9 out of 9 you will get. So it means that you cannot afford even a single mistake. अगर आपको 8.5 और 9 बैंड स्कोर करना है तो कोई भी मिस्टेक आप नहीं अफोर्ड कर सकते. रियलिटी इज के 7 बैंड्स जो है इसमें काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं. 7 बैंड्स इज नॉट वेरी गुड स्कोर. It is fine that it is the bottom line criteria I'm telling you. अगर फॉर एग्जाम्पल आपने इस दफ़ा टेस्ट दिया है एंड यू गेट 7 even in writing, but it is in danger, you are in danger zone, might be next time जब आपने इसको पेपर देना तो फिर आपका स्कोर नीचे गिर सकता है. तो ये एक वो चीज़ है कि हम लोग, तो उसमें वट आपकी जो सा माइंड है वो यही है कि आपका टारगेट जो है 8.5 और 9 का होना चाहिए. और एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करता चाहूँ कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो से वो बहुत ज़्यादा पुअर हैं राइटिंग के अंदर. अब वो क्या करते हैं, क्या सोचते हैं और किस तरीके से हम लोग आगे चलते हैं, इस चीज़ की डिस्कशन भी पहले भी हो चुकी काफ़ी. मज़ीद हम इस पर थोड़ा सा बात करते हैं. और मिस्टेक्स कौन सी करते हैं. अब चूंकि आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को अंदाज़ा है, तो मिस्टेक्स आपने अपने जहन में रखनी है और उसके बाद फिर आपने दोबारा उनको रिपीट नहीं करना. सो लेट्स टॉक अबाउट ग्रामर फर्स्ट. इसमें जो 4 क्राइटेरियाज हैं उसके अकॉर्डिंगली वी विल टॉक. द फर्स्ट वन इज ग्रामर. ग्रामर के अंदर जी दे राइट सिंपल and small sentences in order to avoid mistakes. जी मिस्टेक्स को अवॉइड कर रहे होते हैं, उस वजह से वो छोटे छोटे जुमले लिखते हैं. और यहाँ पे बात ये है कि इफ़ यू विल राइट डाउन इन दिस वे इन ग्रामर सेक्शन मैक्सिमम यू विल गेट 6.5 बैंड. सेकेंड थिंग इज दे हार्डली अंडरस्टैंड इवन इन राइटिंग स्मॉल सेंटेंसेस. अब छोटे छोटे जुमले बनाने जा रहे हैं, उसके अंदर भी लोगों को ये पता नहीं होता कि कॉन्टेक्स्ट क्या है और किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है. अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट और कौन सा टेंस इस्तेमाल करना है. सो अनदर थिंग दे राइट और दे फॉर्म पैसिव sentences excessively. पैसिव वॉइस का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं. और यानी कि मैंने एक वर्ड, मैं ये नहीं कहता कि नहीं करना चाहिए, लेकिन यू मस्ट अवॉइड पैसिव वॉइस. और उसमें आपने एक्टिव वॉइस लिखना होता है. उन्हें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का आइडिया ही नहीं होता, और व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट कीप ऑन राइटिंग पैसिव फॉर्मेशन. सो इन केस ऑफ पैसिव फॉर्मेशन
वो अपना स्कोर जो सा वो ख़राब कर बैठते हैं। और जब भी इट इज़ रिकमेंडेड that you must that you have to not must you have to write active formation in a formal academic writing। जी, सबसे पहले ये कि फॉर्मेशन जो आपकी होनी चाहिए एक्टिव होनी चाहिए, और स्टूडेंट्स जो उनसे यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं वो दे आर डूइंग उसके अकॉर्डिंगली पैसिव फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। ये जी तीसरे स्टेप की जो मिस्टेक है ये आती है। उसके बाद हम आते हैं कि जी नो आइडिया ऑफ पंक्चुएशन एंड mostly test takers they write run on sentences। जब वो लॉन्ग सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करते हैं तो उस केस में अक्सर गलत कर रहे होते हैं। और जब पंक्चुएशन आप यूज नहीं करेंगे तो जो टाइप ऑफ मिस्टेक आप करेंगे वो रन ऑन सेंटेंसेस कहलाएंगी। तो रन ऑन सेंटेंसेस की बेसिकली कर रहे होते हैं। और उसके बाद इफ दे आर राइटिंग लॉन्ग सेंटेंसेस if they are writing long sentences they repeat structure, so and remain failed in producing in presenting diversity in their response। अब होता ही है कि किसी एकेडमी से सीख लिया कि हमने फॉर्मेशन करनी है लॉन्ग सेंटेंसेस की, तो वो जो इफ का ऑल दो का एक दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं उसी को डेवलप कर रहे होते हैं। और उसमें दे हार्डली हैव अंडरस्टैंडिंग कि क्या ओपनिंग नो अंडरस्टैंडिंग के ओपनिंग फ्रेजेस क्या है, क्लोजिंग डिटेल क्या है। और इसके बाद जो एक और कॉमन मिस्टेक है दैट इज पंक्चुएशन। और पंक्चुएशन में कर लिया आर्टिकल्स की तो 95% स्टूडेंट्स हमारे आर्टिकल्स की मिस्टेक्स करते हैं। और आर्टिकल क्या है, ए एन द और जीरो। ये आर्टिकल्स जो है ये आपको फर्दर आगे नहीं जाने देता। अगर आप आर्टिकल की मिस्टेक्स करेंगे तो आप यू कैन नॉट ग्रो फर्दर, उसमें प्रॉब्लम आपको आएगी। सो अगर मतलब कि 6.5 मैक्सिमम आपका स्कोर आएगा। अच्छा, ये बेसिकली बेसिक चीज़ें हैं कि इसमें मैंने आपको पहले बताया कि फॉर एग्जांपल देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। मतलब अब आगे क्लॉजेस का बिल्कुल आइडिया नहीं है, वो तो सारी एडवांस लेवल पे चीज़ें आ जाती है ना। फॉर्मेशन जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, कंपाउंड फॉर्मेशन है, क्लॉजेस वगैरह आ जाती हैं, एसेंशियल नॉन एसेंशियल क्लॉज आ जाती है, उसका कोई आइडिया ही नहीं है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ कि नो आइडिया ऑफ एसेंशियल, और ये बहुत ज़रूरी है, ऑफ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल क्लॉज। नाइन बैंड आप लेना चाह रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको यू नीड टू ओवरकम। जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया उन्हें मैं दोबारा रिपीट करता जाता हूँ एक एक वर्ड के अंदर कि जब आप मिस्टेक्स कर रहे होते हैं राइटिंग में तो सबसे पहले आप छोटे छोटे जुमले बनाते हैं कुछ लोग, और उसको भी सही कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिख सकते। नहीं समझ आ रही होती कि यहाँ पे प्रेजेंट लगेगा, परफेक्ट लगेगा, मे का यूज़ करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे, या विल का यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे, इज एम आर इस्तेमाल करेंगे, जिस पे आप लोगों के साथ काफ़ी डिस्कशन हो चुकी हुई है। लेकिन उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, वो यूज़ तो कर रहे होते हैं लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद या फिर ये होता है कि उनको उनसे टेंस बन नहीं रहे होते, यानी लेवल 1 पे दे रिमेन फेयर इन डेवलपिंग in crafting sentences. Level 2 पे if they are crafting well then they hardly have the idea that what and where and when to use these sentences.
उसके बाद पैसिव वॉइस की फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती है। एक्टिव पैसिव को ध्यान नहीं रखते और पैसिव जहाँ पे नहीं भी ज़रूरत वहाँ पे भी पैसिव वॉइस यूज़ कर रहे होते हैं। तो उस केस में ये होता है कि एकेडमिक राइटिंग के अंदर पैसिव वॉइस को इस्तेमाल किया मना किया जा रहा होता है। पंक्चुएशन का बिल्कुल आइडिया नहीं है हो रहा होता, जिसकी वजह से रन ऑन सेंटेंसेस बन रहे होते हैं और रन ऑन सेंटेंसेस में मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। अगर लंबे सेंटेंसेस लिखना चाहें तो स्ट्रक्चर को रिपीट करते हैं, एक ही तरह के सेंटेंसेस या दो तरह के लॉन्ग सेंटेंसेस को रिपीट कर देते हैं, उसमें डाइवर्सिटी नहीं आती। जिस तरह वोकैबुलरी के बारे में कहा जाता है कि आपने एक वर्ड वोकैबुलरी का इस्तेमाल किया तो दोबारा ना करें, तो ये इसमें भी इसी तरह ही है कि आपने उसको नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें वो मिस्टेक्स हैं जो कि ग्रामर से मुतल्लिक थी। फ्रेजेस का कोई आइडिया नहीं होता और फ्रेजेस का पता ही नहीं है फ्रेज है क्या, तो उसको इस्तेमाल कैसे करना है। इसी तरीके से मतलब दीज आर द थिंग्स के जो कि उनको आइडिया नहीं होता तो वो रॉन्ग यूज़ कर रहे होते हैं। और हमारे यहाँ कुछ मतलब क्या कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं बच्चे, लेकिन कॉन्सेप्ट्स नहीं डेवलप करते। जब कॉन्सेप्ट्स डेवलप नहीं होते तो उनको आइडिया नहीं होता कि हमने करना क्या है। अब ये सारी चीज़ें थी ग्रामर में। दूसरा जब हमारा आता है मिस्टेक्स का पार्ट, वो आता है वोकैबुलरी में क्या करते हैं। जी लेट्स टॉक अबाउट लेक्सिकल रिसोर्सेज और वोकैबुलरी। वोकैबुलरी या टेक्निकल नाम है इसका लेक्सिकल रिसोर्सेज। इसके 9 बैंड्स होते हैं और उसके बाद 25% ली जाती है आपके स्कोर की। तो बात यह है कि लोगों की अजम्पशन क्या है वोकैबुलरी के बारे में। डिफिकल्ट वर्ड, सबसे पहले कहते हैं जी डिफिकल्ट वर्ड इस्तेमाल करने चाहिए। अच्छा, डिफिकल्ट वर्ड क्या चीज़ होती है? कोई कहते हैं कि जो मुश्किल मुश्किल अल्फाज अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको वोकैबुलरी में ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल होता है अनकॉमन वर्ड और एक और होता है लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स। अब ये अनकॉमन वर्ड ये टेस्टिंग बॉडी कहती है कि यू हैव टू अवॉइड, यू मस्ट अवॉइड कॉमन वर्ड्स एंड यू नीड टू राइट अनकॉमन और लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स। लेकिन उसके साथ सबसे पहले ये क्या कर रहे होते हैं बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे, कॉलोकेशन का इशू आ रहा होता है। कॉलोकेशन ये होता है कि हमारे पास सिनोनिम्स होते हैं दो तरह के, एक होता है सब्स्टिट्यूटेबल और एक सिनोनिम होते हैं इनसब्स्टिट्यूटेबल। अच्छा, सब्स्टिट्यूटेबल सिनोनिम वो होते हैं कि जो एक वर्ड अगर उसके जगह पे दूसरा आप इस्तेमाल करें तो वो हो जाता है। मीनिंग तो सेम होता है सिनोनिम्स का, लेकिन ये कि बाज अल्फाज दूसरे की जगह नहीं ले सकते। मिसाल के तौर पे सब्स्टिट्यूटेबल सिनोनिम की बात होती है जिस तरह हम इफेक्ट की बात करते हैं और मैं कहता हूँ इम्पैक्ट, ये एक दूसरे की जगह ले सकते हैं, ठीक है ना। इम्पैक्ट हो गया, इफेक्ट हो गया, ये ले सकते हैं। लेकिन इन सब्स्टिट्यूटेबल सिनोनिम्स के अंदर जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि एक वर्ड है असैसिनेशन एंड एग्जीक्यूशन जी, सो ये एक एग्जांपल है इन सब्स्टिट्यूटेबल की। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कॉलोकेशन का इशू आ रहा होता है और उसको वो लिख रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद अननेसेसरी वर्ड्स। अननेसेसरी वर्ड्स क्या होते हैं कि फॉर नो रीजन स्टूडेंट्स और द टेस्ट टेकर्स कीप ऑन एक्सटेंडिंग द सेंटेंसेस। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक चीज जो हमारे से एक्सपेक्ट की जा रही होती है दैट इज कंसाइज राइटिंग। कंसाइज राइटिंग में टू द पॉइंट आपने बात करनी है
और कंसाइज राइटिंग के अंदर आपने अल्फाज का कम अज़ कम इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा बात डिलीवर करनी होती है। इट डजेंट मीन लॉन्ग सेंटेंसेस तो अपनी जगह पे मौजूद है, और उसके अलावा मिसाल के तौर पे आपने रिपीटिशन से अवॉइड करना होता है। तो यहाँ पे एक तो ये कि फॉर नो रीजन उसको एक्सटेंड कर रहे होते हैं, और दूसरा ये होता है कि रिपीटिशन कर रहे होते हैं। अब रिपीटिशन करने की एक रीजन तो ये है कि उनको आइडिया नहीं हो रहा था कि किसी चीज को लास्ट में हमने कैसे रेफर करना है। मतलब चिल्ड्रन कहेंगे तो बार बार चिल्ड्रन 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 कहते जाएंगे, पीपल कहेंगे तो बार बार लाइब्रेरी का वर्ड लिखेंगे तो लाइब्रेरी 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 बार बार कहते जाएंगे। अब वो लाइब्रेरी का तो वर्ड एक है ना मिसाल के तौर पे, अब आपके पास सिनोनिम तो नहीं है, तो उसके आगे मिसाल के तौर पे सच प्लेसेस हम कह सकते हैं, या द रिसोर्स रूम कह सकते हैं, ठीक है ना। या फिर हम द आर्टिकल प्रोनाउन वगैरह यूज करते हुए उसको एक्सटेंड करते हैं, बार बार एक रूम की बात हम बार उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो ये वाली जो टेक्निक है उसको भी यूज नहीं करते। वो क्या करते हैं कि उस चीज को रिपीट कर देते हैं, तो रिपीटिशन की वजह से भी आपका इम्पैक्ट जो है वो खराब हो जाता है। तो लॉन्ग अननेसेसरी स्ट्रेच हो गया, रिपीटिशन हो गया। यहाँ पे एक और चीज आती है, दैट इज कॉल्ड डैंगलिंग मॉडिफायर। अब ये डैंगलिंग मॉडिफायर्स क्या हैं कि समटाइम्स इस तरह के सेंटेंसेस टू बिगिन विद, ठीक है ना, और या फिर आप कोई और भी फ्रेज देते हैं लेकिन उस फ्रेज का नेक्स्ट सेंटेंस से कोई रिलेशन नहीं बन रहा होता। तो जब किसी फ्रेज का किसी सेंटेंस के साथ रिलेशन ना बन रहा हो तो उसको हम डैंगलिंग मॉडिफायर कहते हैं, कि जो पीछे बात कर रहे हैं आप लोग वो ठीक नहीं है, आगे उसके साथ वो नहीं चल रही, ठीक है ना। उसको हम लोग ये टू बी ट्रू लिखेंगे, टू बी ट्रू लिखेंगे या कोई और भी ओपनिंग फ्रेज देंगे लेकिन उसकी एसोसिएशन नेक्स्ट वाले पार्ट के साथ नहीं बन रही होती। ये भी वोकेबलरी के अंदर जब आप वोकेबलरी में ओपनिंग फ्रेजेस का यूज करते हैं तो ये एक मेजर मिस्टेक है जो कि स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं। अच्छा, कुछ बातें इस तरह की होती हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि जिस तरह मैं कहता हूं मोर एंड मोर चिल्ड्रन, अच्छा मैं यहाँ पे मैं तो जरा दोज हु आर बिलो 18 years, ठीक है ना, act up with their parents। अब ये जो चीज है ना, ये दिस वन, इसको लिखना कि अब चिल्ड्रन का हमें पता लग रहा है लेकिन फॉर नो रीजन उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। अगर किसी और लेजर एक्टिविटीज की बात है तो उस कॉन्टेक्स्ट से अगर चीज कोई ऑब्वियस है तो उसको फर्दर एक्सप्लेनेशन उसकी रिक्वायर्ड नहीं होती। तो हमने उसको बिल्कुल कंसाइज वे में लिखना होता है, जहां पे जरूरी है वहां पे आप लिखें। अगर किसी चीज की एक्सप्लेनेशन जरूरी है लेकिन किसी चीज की एक्सप्लेनेशन नहीं है तो उसको स्ट्रेच कर दें। बच्चे स्कूल जाते हैं, आगे लिखेंगे पढ़ने के लिए, ठीक है ना। बच्चों मतलब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दिखाऊंगा, स्टूडेंट्स वगैरह क्या करते हैं कि फॉर नो रीजन उसको स्ट्रेच कर रहे होते हैं, और वो चीजें जो कि अगर हाफ सेंटेंस से भी ऑब्वियस होती हैं उसको अननेसेसरी आगे स्ट्रेच कर देते हैं, जिससे ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है आपकी राइटिंग का। तो ये एक और मिस्टेक है जो डैंगलिंग मॉडिफायर के बाद आती है कि अननेसेसरी यूज ऑफ वर्ड्स। जी, ये चीज। अच्छा जी, उसके बाद टेस्ट टेकर्स have no idea of parts of speech, so they mm, do errors while writing
एरर कौन सा? वर्ड ऑर्डर while राइटिंग और क्राफ्टिंग सेंटेंसेस। अब वर्ड ऑर्डर का इशू आता है कि आपका पहले आर्टिकल आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा, ये सब्जेक्ट पार्ट है, ये प्रेडिकेट पार्ट है, और दिस इज हाउ यू विल डेवलप। आप सेंटेंसेस को आगे बढ़ा रहे होते हैं। तो जब आपको इस चीज का आइडिया नहीं होता, पार्ट्स ऑफ स्पीच का, नाउन फ्रेज का, वर्ब फ्रेज का आइडिया नहीं होता, सब्जेक्ट प्रेडिकेट का आइडिया नहीं होता, तो अक्सर वर्ड्स की पोजीशन आगे पीछे लिख रहे होते हैं। वो जो पोजीशन जब चेंज हो रही होती है तो उसका सारे का सारा इम्पैक्ट खराब हो जाता है। अब ग्रामर अकेले में कुछ नहीं कर सकती। ग्रामर का एक कम्प्लेक्स फॉर्मेशन आप कर लें और सेंटेंस मीनिंगफुल ना हो तो उसके 5 बैंड है सिर्फ। ये बैंड डिस्क्रिप्टर्स में लिखा हुआ है। हमारी वर्कशॉप हुई थी तो उसमें ये डिस्कशन हुई थी, ठीक है ना। तो ग्रामर के साथ मीनिंग, सिंटैक्स जो है उसको आपने भी साथ देखना है कि सिंटैक्स को आप किस तरह डेवलप करते हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ हमें चूंकि इसका आइडिया नहीं होता तो फिर हम लोग सही वर्ड ऑर्डर लूज कर जाते हैं। एडवर्ब की जगह पे वर्ब, मतलब रॉन्ग वे में हम उसको लिख रहे होते हैं। अच्छा, ये एक और मिस्टेक है जो कि वोकैबुलरी से रिलेटेड है। तो अब ये सारी की सारी वोकैबुलरी से रिलेटेड है। हाँ जी बिल्कुल। एक और बात है, इनफॉर्मल सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। अब जिस तरह कैंट बच्चों की जगह पे किड्स करेंगे। अब किड्स तो इनफॉर्मल वर्ड है ना। इसी तरीके से और भी काफी ज्यादा ऐसे वर्ड्स हैं कि जो कि इनफॉर्मल है, उसका भी अगर आप ज्यादा यूजेज करते हैं, एक आधी जगह कहीं हो जाए इट्स ऑलराइट, लेकिन ज्यादा यूज करते हैं तो इट वुड बी रॉन्ग। फिर उसका एक रॉन्ग जो सा इम्पैक्ट पड़ता है। तो दीज आर द थिंग्स जो कि हमारे ज्यादातर खराब हो रहे होते हैं वोकैबुलरी के अंदर। अब तीसरी टाइप पे हम आते हैं, दैट इज कोहेजन एंड कोहेरेंस। ठीक है जी। इसका ताल्लुक पैसेज फॉर्मेशन से है, पैराग्राफ फॉर्मेशन। जी जी। बताएं मुझे शाकिर साहब कि पैराग्राफ हम कैसे लिखते हैं, पैराग्राफ फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? शाकिर खान। जी सर, ये सर पैराग्राफ फॉर्मेशन, बॉडी पैराग्राफ। हाँ जी, बॉडी पैराग्राफ्स में। सर बॉडी पैराग्राफ में हम मतलब है कि इसमें राइटिंग टास्क 1 में हम जो अगर पैराग्राफ अगर वार चार्ट है उसमें हमें ज्यादा पॉइंट्स दिए गए हैं तो फिर हम जो मेन चीजें हैं उससे हम स्टार्ट लेंगे जो सबसे ज्यादा ऊपर गई हुई है। टास्क ठीक है, टू में जिसकी बताया मुझे, रेशो टास्क टू इसमें। में बताओ। जी पैराग्राफ सर, टास्क 2 में। पैराग्राफ टू में हाँ क्या चीजें ध्यान रखनी होती हैं आप? टास्क 2 का हाँ जी। टास्क 2 में सर जो हम मतलब है कि अगर हमने जो स्टार्ट किया है उसमें कोहेजन एंड कोहेरेंस होनी चाहिए। मतलब है कि हमें उसी को साथ लेकर चलना चाहिए। कोई बात आपस में एकदम एक बात करते हुए दूसरी को चेंज नहीं कर देना चाहिए। उसी तरीके से लिखना चाहिए जिस लय में आ रहे हैं। जी काशिफ, आप बताएं कि आपने क्या अंडरस्टैंड किया कोहेजन कोहेरेंस में, खासतौर पे पैराग्राफ फॉर्मेशन के अंदर, कि एक पैराग्राफ कैसे डेवलप करना चाहिए? सर जैसे अगर एडवांटेज और डिसएडवांटेज का क्वेश्चन है, जब इनिशियली फर्स्ट पैराग्राफ में हम एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, तो अगर जब हमने एक एडवांटेज लिया तो सेकंड पैराग्राफ में हम उसी एडवांटेज को मतलब उसके रीजंस बताएंगे 1 2 3। एक मतलब उसकी सीक्वेंस में होना चाहिए, मतलब वो पूरे का एक सेंट्रल आइडिया होना चाहिए। हाँ जी, सेंट्रल आइडिया। और सेंट्रल आइडिया हम कहाँ पे डिफाइन करते हैं ज़्यादातर? सर ये सेकंड पैराग्राफ में, मतलब बॉडी का जब बॉडी होती है ना, मतलब इंट्रोडक्शन के बाद जो सेकंड नहीं, पैराग्राफ में वो से। हर पैराग्राफ का एक सेंट्रल आइडिया होता है, और हर पैराग्राफ का एक सेंट्रल आइडिया होता है। और वो जो सेंट्रल आइडिया है वो हम आम तौर पे पहली 2 लाइनों में डिफाइन कर देते हैं, जिसको हम टॉपिक सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है सर। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग सपोर्टिव सेंटेंसेस लिखते हैं। ये मिस्टेक है कि स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता और एकदम उसके साथ वो लिखना शुरू कर देते हैं। दूसरी जो इसमें इशू ये आता है कि सेंटेंसेस को आपस में रिलेट नहीं कर पाते।
एक सेंटेंस अलग से नजर आ रहा होता है, उससे अगला सेंटेंस अलग से नजर आ रहा होता है, तो उनका जो लॉजिकल कनेक्शन है वो नहीं डेवलप कर पाते, जिसकी वजह से ये कोहेजन कोहेरेंस के इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। और इसका 25%, आपकी ग्रामर भी ठीक है, आपकी वोकैबुलरी भी ठीक है, कोहेजन कोहेरेंस खराब है तो आपका स्कोर जो सा वो गिर जाएगा, आप अपना स्कोर नहीं कर सकेंगे। तो ये भी एक मेजर इशू है इसके अंदर जो कि आपने अपने जहन में रखना है। अच्छा, और दूसरा ये कि इसके अंदर कोहेसिव डिवाइसेस होती हैं। कोहेसिव डिवाइसेस जैसा कि मोर ओवर, फर्दर, दिस इज हाउ, और फॉर दिस रीजन, ये सारी कोहेसिव डिवाइसेस हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या तो इसका इस्तेमाल नहीं करते और लॉजिकली वैसे भी उसकी रिलेशन नहीं क्रिएट हो रही होती। अच्छा, इस तरह हम यूं भी कह सकते हैं ना, सच पीपल या सच चिल्ड्रन या दीज चिल्ड्रन, इस तरह करके पिछले सेंटेंस के साथ हम लोग जोड़ रहे होते हैं। या फिर इसका ओवर यूज करते हैं, बार बार मोर ओवर, देयर फॉर दिस रीजन, सो दैट, ये बार बार लिखेंगे, तो उससे भी वो एक अननेचुरल सा जो सा ना इम्पैक्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है, जिससे आप स्कोर जो सा वो लूज कर बैठते हैं कोहेजन कोहेरेंस के अंदर। एक आर्टिफिशियलिटी जो सी है ना वो डेवलप हो जाती है, उससे आप वोकैबुलरी में भी स्कोर खराब कर बैठते हैं अपना, और इसके अंदर भी आप कोहेजन कोहेरेंस में भी, यानी कि आप फ्लेक्सिबल नहीं होते, यू आर नॉट फ्लेक्सिबल इन यूजिंग दीज काइंड ऑफ वर्ड्स। ठीक है ना, ये इश्यू जो सा वो आ रहा होता है इसके अंदर। अच्छा जी, तो ये तो हो गया कोहेजन कोहेरेंस का। और अब आखिरी चीज जो सी है जो जिसमें स्टूडेंट्स वो करते हैं, दैट इज रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स के लिए हमारा एक लेक्चर प्लानिंग था, अप्रोचिंग टास्क 2 था, ठीक है जी। और उसमें कितने पार्ट होते हैं, उसमें टॉपिक क्या चीज होती है, और टॉपिक के बाद हम ये बताते हैं कि आपने आपकी ओपिनियन टाइप ऑफ ऐसे कौन सा है, और उसके अंदर क्या सेंट्रल आइडियाज होंगे, ठीक है ना, और उसके अंदर पैराग्राफ आप कैसे बनाएंगे। ये सारी चीजें हमने पहले डिस्कस करनी होती है, सोचना होता है लिखने से पहले, 3-4 मिनट लेते हैं और 3-4 मिनट के अंदर हम ये डिसाइड करते हैं। इसी डिसीजन के ऊपर हमारा आगे क्वेश्चन जो है वो डेवलप हो रहा होता है। और ये भी देखा गया कि कुछ स्टूडेंट को आइडिया नहीं होता, पूछा कुछ और जा रहा होता है, एग्जाम्पल्स जो सी इररेलेवेंट कोड कर रहे होते हैं, और जवाब उसका कोई और दे रहे होते हैं। तो उसमें ये कि यानी कि वो क्वेश्चन बिल्कुल ही एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाता है। तो अब आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी है, अब आपकी बेसिकली ग्रामर भी अच्छी है, लेकिन फिर भी आप इसको सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो दिस इज हाउ स्टूडेंट्स लूज मार्क्स इन दिस सेशन एज वेल। तो ये भी प्रॉब्लम आ रही होती है। तो ये हमारी वो चीजें हैं कि जो कि कॉमन है मिस्टेक्स वगैरह राइटिंग टास्क 2 के अंदर। अब हम बात करते हैं राइटिंग टास्क 1 की, लेटर की बात करते हैं, और उसके बाद राइटिंग टास्क 1 एकेडमिक की बात करेंगे। जी, नो आइडिया ऑफ टोन, और स्टूडेंट्स दे चेंज स्टाइल ऑफ राइटिंग ड्यूरिंग। अच्छा, उसके बाद टोन का आइडिया नहीं है, स्टाइल जो सा वो भी चेंज कर लेते हैं। उसके अलावा ये कि दे डोंट they do not fully address the main points of letter, ठीक है ना। प्रॉपर ओपनिंग, एंडिंग और पर्पस वगैरह नहीं बता पाते। ये 2-3 चीजें कि जो कि विच दे कैन नॉट डू।
ठीक है, सो दिस इज समथिंग जो कि हमारा इससे वो होता है मुतल्लिक। तो यहाँ पे भी आपने इस चीज को भी अपने माइंड में रखना है कि बेसिकली ओपनिंग एंडिंग और पर्पस वगैरह उसका नहीं डिफाइन होता, तो जिसकी वजह से आपका जो सा ना लेटर खराब हो रहा है। अब लेटर के अंदर भी वही चीजें जो टास्क 2 के अंदर बताई हैं, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन, अच्छे वर्ड्स, कंसाइज राइटिंग, अच्छी वोकेबलरी और डिफरेंट वे में आपका जो स्टाइल है उसमें आपने देखना है कि कौन सा लेटर है उसके अकॉर्डिंगली क्या है इसमें, पैराग्राफ फॉर्मेशन, कोहेजन, कोहेरेंस, वो भी सारी चीजें इसी तरह इस्तेमाल हो रही होती हैं जो कि टास्क 2 में हो रही थी। तो ये भी आपने यू नीड टू कीप इन योर माइंड। अब हम आते हैं राइटिंग टास्क 1 लेटर उसके ऊपर ग्राफ वगैरह पे। राइटिंग टास्क 1 जी, सबसे बड़ा जो मसला होता है ना ग्राफ का, कि मैं ये कहता हूँ कि यू हैव टू अटेम्प्ट इन फर्स्ट आपने सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसके 67% मार्क्स हैं, और उसके बाद आप लोगों ने ग्राफ वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसका 33% मार्क्स हैं। तो ये अगर आप इसको पहले करेंगे तो ये टाइम ज्यादा ले जाएगा, उसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा आपका, और वो जो है वो आप खराब कर बैठेंगे। ज्यादा स्कोर वाले को खराब कर बैठेंगे, कम स्कोर वाले पे बहुत ज्यादा टाइम देना शुरू कर देंगे। जो फर्स्ट टाइम पेपर देते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स ये काम करते हैं। अब दूसरा आप क्या करते हैं, बेसिकली आप लोग क्या करते हैं कि यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू व्हाट आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपने उसके अंदर यू हैव टू मेंशन इन राइटिंग टास्क 1। अक्सर मतलब इसमें मिनिमम वैल्यू जहां पे वैल्यूज चेंज हो रही है, या क्या कर रहे होते हैं, ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, जिसकी वजह से भी काम खराब हो रहा था। या फिर ये कर रहे होते हैं कि समरी छोड़ देते हैं, समरी का आइडिया नहीं है, या फिर इनकरेक्ट वैल्यूज दे रहे होते हैं, रिपीट कर रहे होते हैं जिस तरह हम टास्क 2 में करते हैं, रिपीटिशन आ रही होती है वोकैबुलरी के अंदर। और उसके अलावा ये है कि बेसिकली पैटर्न का आइडिया नहीं हो रहा था कि किस तरीके से आपने करना है, वोकैबुलरी बहुत लिमिटेड होती है। और सबसे जो बड़ा इशू आ रहा होता है वो होता है कोहेजन कोहेरेंस। इसमें कोहेजन कोहेरेंस बहुत मैटर करती है, क्योंकि इसमें आप ना एक आम तौर पे लग रहा था कि जैसे कभी ग्राफ के ना ये पॉइंट को डिस्कस किया, फिर ये पॉइंट को डिस्कस किया, फिर ये पॉइंट को डिस्कस किया, एक उसका फ्लो नहीं डेवलप हो पा रहा था, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कोर अपना लूज कर जाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, आई होप सो कि आप लोग अंडरस्टैंड आपने कर लिया होगा। और अगर आप कुछ पूछना चाहें आज तक हमने जो कुछ पढ़ा अभी तक, तो पूछें, उसके बाद मैं थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दूं जो कि हमारा टास्क 1 के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा चीज कुछ रह गई थी उसको हम लोग एड्रेस करें। लेकिन अब तक जो आप मैंने बताया है इसमें कुछ आप पूछना चाहें तो यू कैन आस्क। हेलो सर। जी जी बोले। सर ये मैंने कल के जो ऐसे मैंने पोस्ट किया था कैसे का क्वेश्चन ग्रुप में, उसके बारे में पूछना था। जी पूछें। ओके सर, इसकी कंक्लूजन कैसे लिखेंगे? जैसे कोई, जैसे सर ये क्वेश्चन था, मोर एंड मोर पीपल प्रेफर टू रीड ई बुक्स, वो वाला। व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस एंड व्हाट प्रॉब्लम कैन दिस कॉज फॉर लाइब्रेरी? तो सर इसकी कंक्लूजन में क्या मेंशन करेंगे? सोल्यूशन कोई उसका या क्या? एक सेकेंड है जरा। मैं आपका देख रहा हूँ, वही वाला क्वेश्चन जो ग्रुप में आपने सेंड किया था। जी जी सर, वही बिल्कुल।
मुझे ज़रा निकाल लेने देना। अच्छा, वो जिसका मैंने लिख के आंसर सा सेंड किया था थोड़ा सा। जी जी बिल्कुल। मोर एंड मोर पीपल प्रेफर टू रीड बुक्स। अब आपने बताना ये है कि अच्छा, ज़्यादातर लोग, इसके रीजंस क्या हैं और ये प्रॉब्लम्स किस तरह। अब ये आपने बताना है बेसिकली कि ये ट्रेंड जो सा है जी सर। लाइब्रेरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताएंगे। एक तो ये बताएं, रीफ्रेज करें कि वाकई ऐसा हो रहा है और उसके रीज़न क्या है। वो तो आपने बता दिया अब सारी की सारी रीजंस। और अब आप ये बताएं, इसको एक फाइनल अपना एक स्टेटमेंट दे दें कि जी लाइब्रेरीज से ख़त्म होंगी या नहीं होंगी। बस ये बात कर लें। तो कंक्लूजन में ये बता दें बस। हाँ, कंक्लूजन में रीफ्रेज करते होते हैं हम लोग ना आमतौर पे अपनी पोजीशन को और सेटल करते हैं। आप उसी स्टेटमेंट को रीफ्रेज करते हैं जो इंट्रोडक्शन में बात की होती है। उसके अलावा कुछ रिकमेंडेशंस देते हैं और या जी फिर ये कि फ्यूचर के बारे में बात करते हैं कि ये हो सकता है। तो इसमें भी आप फ्यूचर के बारे में बात कर सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज़ है। मिसाल के तौर पे आज स्टूडेंट्स कर रहे थे मॉर्निंग में, तो उनके साथ एक चीज़ डिस्कस ये हुई थी ये कि बेसिकली क्या इसकी पॉसिबिलिटी है, लाइब्रेरीज आपके ख्याल से ख़त्म हो जाएंगी, क्या होगा, हम्म, क्या बताएं मुझे। खत्म हो जाएंगे। कम तो हो गई हैं तो श्योरली खत्म हो जाएंगी आने वाले टाइम में। हाँ, इसमें ख़त्म तो एज सच नहीं होंगी, लेकिन ये होगा कि उसका थोड़ा सा यूजेज कम हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि जब आप बात करते हैं ना रीडर्स की, जो तो टिपिकल पढ़ने वाले बुक्स हैं, एक है बुक्स में से किसी इंफॉर्मेशन को तलाश करना, वो जी आप सर। इंटरनेट और आर्टिकल्स वगैरह को यूज कर लेते हैं। लेकिन जब आपको एक्सटेंसिव रीडिंग करनी पड़ती है तो उसमें ये देखा गया है कि 75% आपकी एबिलिटी रह जाती है स्क्रीन के ऊपर। एक जी हद से ज़्यादा 40-50 मिनट से ज़्यादा आप इस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। और बाज़ का एक बुक को पढ़ने के लिए आपको 5-5 घंटे 6-6 घंटे भी कंसिस्टेंट स्टडी करनी पड़ती है। तो उस केस में जो बुक्स हैं उनकी अपनी अफादियत मौजूद है, उसको हम लोग नहीं निगेट कर सकते। काफ़ी ज़्यादा जो अच्छी ऑफिशियल बुक्स हैं उनकी ई कॉपीज़ भी नहीं मिलती। जैसे आइल्स की जब जो टेस्ट वगैरह उनकी ई कॉपीज़ जो सी हैं वो ऑफिशियल नहीं अलाउ, लोग खुद से कॉपी करके तो उसको चेंज कर देते हैं। तो एक तो ये है कि उनके पास ये भी एक इशू होता है। और दूसरा ये है कि हाँ, इससे इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा कि लोगों का लाइब्रेरीज को कंसल्ट करना वो कम होगा। जो बुक की एग्जिस्टेंस है ना उसका कोई अल्टरनेट अभी नहीं आया। जो ओरिजिनल बुक की है वो आपके पास एज अ लेगेसी सेव रहती हैं और आप उसको कंसल्ट करते रहते हैं। और बाज़ बुक्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, हम कहते हैं ना जिस तरह बाइबल ऑफ मैथमेटिक्स। बाइबल ऑफ मैथमेटिक्स मतलब वो कोर सब्जेक्ट के तौर पे ना लोग उसको ले रहे होते हैं, मतलब उन बुक्स को कि जी कोर बुक्स हैं। तो इस तरह ये होती है। तो आप इसमें ये कहेंगे कि हाँ, मैं इस चीज़ को मतलब इन द कल्मिनेशन ऑफ द अबाउट डिस्कशन वी मे सेड दैट बिकॉज ऑफ दिस शिफ्टिंग ट्रेंड लाइब्रेरीज, या फिर ये कि हम ये कहेंगे जो फ्लो ऑफ पॉपुलेशन है टुवर्ड्स लाइब्रेरीज वो कम होगा। देयर विल बी सिग्निफिकेंट डिक्रीज और डिक्लाइन इन द यूजेज ऑफ लाइब्रेरीज, बट इट इज टू अर्ली टू क्लेम दैट libraries will be vanished or wiped out from the in the coming days। ठीक है ना, ये कहना अभी बहुत जल्द होगा, ये जल्दबाजी वाली बात है कि हम ये कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दें कि लाइब्रेरीज ख़त्म हो जाएंगी। बल्कि एग्जिस्टिंग लाइब्रेरीज में ये देखा गया है कि कंप्यूटर सेक्शन और ई बुक्स की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो लाइब्रेरीज के अंदर दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं जो आजकल हैं। वो ये कि वो भी है। तो अब इस चीज को अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जिस तरह देते हैं ना तो उसको वाइंड अप करेंगे। दूसरा ये जो तुमने कॉपी किया था ना क्वेश्चन, इस पे जी जिस जी तरह दैन के स्पेलिंग भी गलत है यहाँ पे, यहाँ से मुझे लग रहा था ये कोई सही नहीं, मतलब कैम्ब्रिज के होता ना तो प्रॉपर शायद ये भी इसमें कुछ एक पार्ट आखिर में लाइन ये भी दी होती कि आप अपना ओपिनियन दें इसके बारे में। तो ये एक जनरल सा क्वेश्चन था, उसको फ्लोट किया गया। बहरहाल आंसर तो लिख दिया, लेकिन ये कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसको देखना पड़ेगा।
जी सर, देते हैं। अच्छा जी, अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। किसी ने आंसर लिखा है टास्क 1 का, एकेडमिक टास्क 1 का। अभी मुझसे कौन मती कह रहे थे, मतीउर रहमान, मतीउर रब, आप कह रहे थे? यस सर, वो मैंने आपको सेंड किया आपके ना व्हाट्सएप पे। इन द ईयर 2010, ठीक है, इन द ईयर 2010। ये पहले 2 पैराग्राफ तो आपके ठीक है। अब ये ना जब आप लिख रहे हैं ना, तो एक वर्ड हम यूज करते हैं रिस्पेक्टिवली, आखिर में आपने मतलब में यूज किया है, तो ऊपर वाले में रिस्पेक्टिवली नहीं आएगा, वाइल से पहले पहले आपने लिखा है कि सर वो मैंने यूके इसलिए लिखा है अप्रॉक्सीमेटली। कि वो कंपेयर है, तो एक ही बार एंड पे रिस्पेक्टिवली, इस तरह नहीं यूज होना, दोनों में लिखना है बारी बारी। मैं जरा देख लूंगा इसको, सेंस बन रही है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि यानी कि अब जो पहली वैल्यू है कार के साथ 45,000, 4,50,000 आ रहा है, और बुक्स के साथ नेक्स्ट वाली आ रही है, और कैमरा के साथ नेक्स्ट आ रही है, ठीक है, यूके के केस में। जबकि फ्रांस के केस में फिर गाड़ियों के साथ इस तरह, इसी तरह बात करें ना, पहली वाली यस सर, 400,000 आ रही है एग्जैक्टली इस ऐसे ही तरह, बात कर रहा हूँ। ठीक है। मैसिव डिफरेंस, ये मैसिव डिफरेंस जो है ना, इसको जरा चेंज करें वर्ड को, अ क्लियर डिफरेंस कर लें। ओके सर। कैन बी सीन कैमरा एक्सपेंडिचर ऑलमोस्ट फ्रांस स्पेंड। हाँ ये ठीक है यार, अच्छा लिखा हुआ आपने, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अब कुछ वोकैबुलरी के वर्ड जरा बस आप लिख लें, और उसके बाद फिर हम लोग एंड करते हैं इसको। जरा अपना थोड़ा सा वो बंद कर लीजिए। हाँ शोर आ रहा है पीछे से, माइक किसी ने ऑन किया हुआ। जी कुछ नाउन्स हैं, कुछ वर्ब्स हैं। अराइज एंड इंक्रीज, a surge, a growth, a fall,
a dip, a decline, ठीक है जी, a drop, a peak, to peak। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं टू शो एन अपवर्ड ट्रेंड। A fluctuation, a variation, ठीक है ना। उसके बाद a period of stability, to stabilize, फिर हम ये कह सकते हैं कि STEADILY, steadily, relatively, considerably, significantly, respectively, the second highest, the third lowest, slightly, gently, gradually। ठीक है जी, ये कुछ चीज़ें हैं, ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, इसको अपने माइंड में रखें। अब इनको आप इस्तेमाल करें उसके अंदर, और इससे मुतालिक मज़ीद कोई अगर इंफॉर्मेशन मुझे साथ साथ हम शेयर करते रहेंगे। अगर कुछ आती हैं ऐसी कि जो कुछ नहीं है, कोई बात आती है समझ, तो इंशाल्लाह ताला वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, इसमें अपने जहन में ये रखना है, इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले बताया था, ओवरव्यू, सेलेक्टिंग द की फीचर्स एंड एक्सप्लेन देम क्लियरली, और चेक योर वर्क। ये चार चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है ना। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, दूसरा है ओवरव्यू, तीसरा है select the key features and explain them clearly। अच्छा, इसमें आपने क्या बनाना है कि यूज लैंग्वेज ऑफ सीक्वेंस, यूज लैंग्वेज ऑफ सीक्वेंस। मिसाल के तौर पे द फर्स्ट स्टेज इज, जी बुलाएं, उसके बाद देन, उसके बाद आफ्टर दैट, उसके बाद फाइनली। यानी कि बातें इस तरह करनी, ये कोहेजन क्रिएट करेगी ना, ये सारी की सारी बातें।
सबसे पहले क्या, उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उसके बाद, ये इस तरह आपने बताना है। ये लैंग्वेज ऑफ सीक्वेंस है, ये आपका स्कोर बढ़ाएगी। ये डिस्क्रिप्टिव टास्क है, इसमें बस इस तरह की लिमिटेड सी वोकैबुलरी है और प्रैक्टिस ज़्यादा इसमें ज़रूरत है, प्रैक्टिस की। मज़ीद जो से इसमें वो नहीं आपने करना। आखिर में अपने काम को भी अच्छी तरह आपने देखना है। अच्छा, इंट्रोडक्शन के अंदर मती ये ज़रा देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है एक। इंट्रोडक्शन के अंदर आपने कोशिश ये करनी है 3 चीज़ों को कवर करें, व्हाट, व्हेन, वेयर। व्हाट, व्हेन, वेयर, इसी सीक्वेंस में रहने दें कि क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। ये 3 चीज़ें आपने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में आपने कवर करने की कोशिश करनी है। तो इससे आगे बस अब प्रैक्टिस है। और ये आज हमारा लास्ट लेक्चर था। कल आप लोगों की छुट्टी है, थोड़ा सा आराम करें। और फ्राइडे को मैं आप लोगों को अलाउ करूंगा उसमें, बेसिकली कि आप ओरिएंटेशन सेशन, बल्कि आप लोग रहने दें, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो लें। फ्राइडे को ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का प्रैक्टिस सेशन होगा। फ्राइडे को भी प्रैक्टिस सेशन होगा, कल भी प्रैक्टिस सेशन होगा। मैं प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लूँगा, लेकिन अब जो टीचिंग है वो मंडे से स्टार्ट होगी हमारी। और फ्राइडे को हमारा ओरिएंटेशन सेशन, फ्राइडे को प्रैक्टिस सेशन ही होगा आपका। कल आपका प्रैक्टिस सेशन होगा, फ्राइडे को ओरिएंटेशन सेशन होगा, जो फरवरी के स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे पास। और इसी तरीके से मंडे से प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और इस दफ़ा इंशाल्लाह प्रैक्टिस में हम लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम देंगे, यानी कि जो लेक्चर्स चल रहे होंगे वो तो लदा चल रहे होंगे, लेकिन प्रैक्टिस में भी साथ साथ आप लोगों के हम वर्कआउट करेंगे ज़्यादा। तो जो लोग तो दिसंबर के हैं और उन्होंने दिसंबर का भी सेशन लिया, जनवरी का भी सेशन लिया, वो अब तैयारी पकड़े फाइनल अपनी, ठीक है ना। दिसंबर जनवरी 2 माह आपको हो गए हुए। अब आप अपनी फाइनल तैयारी करें और आप पेपर के लिए माइंड सेट करें। जिन्होंने जनवरी में एडमिशन लिया था, आपके पास अभी टाइम है, आप भी अपनी प्रैक्टिस करें। लेकिन ये कि अगर कोई वीक एरियाज रह गए हैं तो उनको दोबारा भी आप देख सकते हैं। और आखिर में ये कि कोशिश ये करें कि आप इस महीने में, मतलब बेहतरीन, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी आए कि जिन्होंने 1.5 माह तैयारी के बाद 8777 बैंड ले लिए, ठीक है ना। अब मैंने एक और चीज़ नोट की, अब इसको, ये जो हमारे सामने बच्चा बैठा हुआ है, ये मती और रब, इसने काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूवमेंट की है। और मेरा ख्याल में इसको 15-20 दिन ही हुए हैं। कितनी देर हुई है मतिया आपको? सर 15 डेज हुए हैं तकरीबन। 15 दिन हुए हैं ना। तो अब आप अगले, 16 ऑलमोस्ट। हाँ हाँ, जी। अब नेक्स्ट 15 डेज में यू आर ऑलमोस्ट रेडी फॉर 8 ईच बैंड ना, अगर थोड़ा सा मेहनत इंशाल्लाह सर। ज़्यादा करें इंशाल्लाह ताला। तो एक महीने में अगर आपकी कुछ तरह इंटेलिजेंट है, आपकी बेस बनी है, थोड़े से हार्ड वर्कर है, तो आपकी तैयारी हो जाती है। मैं सबके लिए नहीं कह रहा, कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको टाइम चाहिए 2-3 माह, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं कि जो कि जल्दी कर सकते हैं। तो जो कर सकते हैं वो जल्दी करें और उसके बाद फिर पेपर दें अपना। जितना ज़्यादा हम इसको इल्तवा का शिकार करेंगे, प्रोक्रास्टिनेशन करेंगे, या हम लोग ज़रा वो ख़ास तौर पे जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, जी डॉक्टर रिजवान कब देना पेपर अब आपने? जवाद सरफराज, आप बताएं जी। सर ये कोशिश तो मेरी ये है कि मैं नेक्स्ट ये मंथ में प्रैक्टिस करके तो अर्ली मार्च में दे दूं। जी डॉक्टर रिजवान। अभी तो मैं कह रहा मिड फरवरी का प्लान है, मिड फरवरी में दिया जाए। अच्छा मेरी बात सुने, अब मैं नहीं ये कह रहा कि आप मुझे परफॉर्म करके दिखाएंगे तो वो फाइनल होगा। अगर आपकी मिस्टेक्स वगैरह जी निकल सर। रही हैं तो फिर तो बेशक पूरा महीना भी लग जाए, तो मैंने तो रिकमेंड नहीं करना ना। मैं तो तभी रिकमेंड करूंगा जब आप उस लेवल का लिख के दिखाएंगे। मेरे पास इधर इन हाउस हमारी जी क्लासेस हो रही हैं। दूसरा ये कि हर सैटरडे को जितने भी पंजाब के लोग हैं वो मेरे पास आए। उसमें ये कि हम लोग मॉक टेस्ट आप लोगों का लेंगे, इन हाउस आए, और मॉक टेस्ट के साथ वर्कशॉप भी होगी हमारी, जो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें वगैरह बताऊंगा। हर सैटरडे को ये हमने नया एक चीज़ ऐड की है इसमें। लाहौर के तो आएंगे ही आएंगे, लाहौर के अलावा पंजाब से भी जो लोग हैं वो आए, इस्लामाबाद से भी आ सकते हैं, तो आप आए, वो फ़ायदेमंद होगा आपके लिए।
अगर एक हफ्ते में हर हफ्ते नहीं आ सकते तो आफ्टर 15 डेज जरूर चक्कर लगाएं, जी सर इंशाल्लाह। ठीक है ना। और उसमें मॉक टेस्ट वगैरह दें ताकि उसमें सही पता लगे आपको टाइम फ्रेम के अंदर जब आपने अटेम्प्ट करना है तो आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। यस ठीक है। ठीक है जी, चलें जी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और ये वो, और आई होप सो कि आप लोगों ने काफ़ी सीखा होगा और काफ़ी नई चीज़ों का आपको पता लगा होगा इसमें। जी फिजान साहब आ गए हैं? आ रहे हैं। अच्छा। जी कमल, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? यार ये मेरा फ़ोन देना। जी वेट करें, 5 minutes सर फिजान ही विल जॉइन यू।
Assalamu alaikum, students. How are you? Alright, without wasting our time, I think we'll have to start right now. Yep. So we'll have to write down some questions, right? So, but because of the day are quite near, so we'll have to do the practice a lot before going to the examination, alright? If you feel any kind of the music, or maybe any kind of the problem, you get asked to me. Write down a question, please. Okay, now I'll give some words to you. By using these words, you'll have to make the story regarding that. You can use 10 to 20% of that, and rest of your vocabulary you have to use on your own. Okay? Write down, please. First one word is telephone calls. First word is telephone calls. Second one is time spending. Third one is messages. Fourth one is means of mode: car, plane, boat, bicycles, motorbike, train, airplane. Right. Fourth, Sorry. What is the fourth one? Means of? means of words. Every kind of means of mode you have to write down. You know, for example, like car, boat, or maybe airplane, bicycle, motorbike, any one of them. Okay, then traveling, problems, daily journey, trips, school, universities, colleges. Future planning, agree, disagree, international traveling, different countries, positive difference, economic crisis, security, benefits, members, experiences, offered, health center, employment, medicals, sports injury, travel advice, vaccinations, doctors, electricity industry, off and on, reset button, time control, indicators, cupboard, windows, living room, villas, doors, swimming pools, gardening, trees, ocean, sea, lakes, rivers,
canals, wind, tornadoes, thundering, drizzling, raining, weathers, cold, hot, survive. The last one word is fittest to survive. Now you'll have to do this, okay? What are you supposed to do by using these words? You'll have to make a very good story. Maybe any journey or anything, whatever you would like to. I'm not giving you. Choose main word or main point and try to put all of these easy words in it or maximum, and try to use your own vocabulary as well. Try to make the story on your own, but it should be very good. Here you go, you have 5 minutes to think about it. Hurry up. Ali Raza, is this your first lecture with me? Yes, sir. Have you understood everything? Yes, I'm trying actually. Okay, do it then. Yes, Miss Kamal. Kashif, I read your message last time, but I didn't have book number 8 at that time, okay? Let me concern you first, then I'll tell you that why you are not understanding. Okay, sir. Second and 5. No problem then. Don't be afraid. So shall I start? Yes.
I try to make my topic from your given words. So I will here describe the usage of smartphones. So the smartphone which I am using is a Note S5. So in these days, more and more people are spending most of their time on their smartphones. So they are using for text purpose, messaging, and in fact, you also by using this such good smartphones, people are checking the internet, and they are checking, they are using as a travelry advice. And more students are using in universities, and sometime also I'm checking weather forecasts, and I'm reading different sports news, and also I put the reminders. And in fact, I used recently while we were building our house, we checked many designs of living room, villas, pools, and I occasionally watch weather forecast with my smartphone. All right. Thank you. That is Can quite I start? different. Yes, Pati. Okay. I will talk about a trip which I took when I was a kid, little kid, when I was, in 8th or 9th grade in my school days. We took a trip via bus to northern areas, especially to Kakanaran and, Safil Muluk Lake. Oh. There were, at that time, there were no cell phones. So it was very difficult to, connect with everybody. So we'll have to stop at some PCO to call our family members, like my father and mother as well. So we face a lot of problems. Yeah. You said you call off. Call off? Call off now. This is an idiom. To call. No, I said to call. Yeah, to call. To call my father and mother. So after that, in that trip, we, enjoyed a lot, but we faced a lot of problems as well. I will talk about, my experience over there. I went to the Safar Muluk Lake. At that time, it started raining as well. So it was a thunderstorm. And it was very cold. So after that, when we'll come to our, our guest room, it was a villa, which are, a school arranged for us. There were a lot of, space available for us, but sadly there weren't any cupboards, and we cannot open the windows as well because of it was too cold. So we put a, bonfire in the backyard, and we'll stay there for, like 2 or 3 hours. And then we went to the Balakot, and in that there was an antique shop in which they have, many items which they exhibit on the platform. Mm-hmm. The thing about that trip and the current trips which I took was that, the positive difference about that trip and this and the current trips which I took is that currently we use a lot of phones and we do not enjoy the beauty. But in that time, we'll have a lot of time with the nature, with the greenery. It's very good for your health and it can release your muscles as relax your muscles as well. So that's the positive difference for I think in my opinion. Mm-hmm. Okay, you're talking about the trip. Yes, Tahir. Jawad, anyone? Yes, sir, I can start. Okay, so last week I was sitting at home with my family. I got a telephone call, right? There was one of my colleague. He was asking me how you are spending time today, right? And then he talked me about the email message which he got from our boss, right? So he want us to travel next week, right, to Amsterdam. Right, so he told us that you can take an aeroplane right from Jeddah to Amsterdam, and then you have to take the train from Amsterdam to reach to Utrecht, right? And on the weekend, you can also use some bicycles to move around in the city, right? And if you get any problem, just call me. I will be help you in anything. And the first day of our working day, right, we will talk about some future planning and
we have a lot of issues in our area, right? We are based in an area where we have a lot of schools, university, and colleges around us, right? And we will also talk about right, the international travels which are coming in the future days, right, for our teams, right, how we will go in different areas and different countries to support the teams in a different way, right. So after this, we also talk about, right, some economic crisis which are happening right now in Pakistan, and how the new government is trying to cope about these issues, right. We also talk about the security concerns and the benefits which we are getting by different loans, or which we are getting from our neighboring countries or our allied countries. Then we talk about a little bit about our experiences, how how I spent my life, my professional life before, and we talk about recent change in the policy, company policy about the health center and then the healthcare. Right, we are hiring some new people as well in our company, so we discuss about this thing, that how these new employees are bringing the employment opportunity for the country where we are living. And then we talk about recent match which happened just 2 days before, about and there was an injury to one of the player, right, that how these sports injuries affect the life of these players and how difficult for them to cope up with this one. Then we came back again to our next week travel, right? So he told me about the travel advice which he got from our security, that what we need to avoid. They also told about the vaccination which we have to take before we travel, and then we talk about different how we will live there, right. We have some a small villa where we have a living room, right, a small swimming pool along with a garden in that area, so it will be a good trip for us, right. And then on the weekend, what we can do, we can go to some beach nearby, right? We can visit some lakes. There are a lot of lakes, and there are a lot of rivers nearby where we can visit. There are a lot of wind mills in that area. That will be a good attraction for us, but we have to be very careful during the weekends, because there are a lot of rain in these days, right? Sometime it drizzle as well, and we have thundering clouds as well. So these things we have to take care about the weather, and also, right, we are going from a hot weather to a cold weather, so we should take care of these things as well. That how we will survive in that area. Mm, I try to cover all the things. yeah, that was the mixture of different sentences. Anyway, but you have covered it, maximum words. That was great. Okay, yes, Saida, have you done something? How many times, right? So many times, bro. I'm not bothering you. After that, I was not, I mean, I'm thinking to bother about that. Yes. Okay, right. Alright, so say as maximum as you can, because it's a habit, so habit can never be changed. Yes, Saira. Yes, sir. Today I was just checking the pictures in my cell phone, and I was just about to delete some data, and I just found some pictures when I went to perform Umrah, and so it was the greatest memory which I recalled today, as I went to a I went from a airline from which was a connected flight. Uh, Bye. so Bye, sorry, bye, bye, sorry. an airplane. Bye. Yes, yes. It was in connected flight from Pakistan
returned to Abu Dhabi and Abu Dhabi to Jeddah. So it was a very good experience to visit two countries at the same time. And the weather of when I reached at the airport of Jeddah, the weather was very hot. I feel really very uh, um, suffocated. And the behavior of the people over there was very rude with Pakistani people especially. And anyways, when we clear the when we clear our sir, actually Every formality. today I'm suffering from People? no actually sorry sir, today I'm suffering from migraine, so I'm not concentrating on my topic. Okay, no problem. So sorry if I Okay, no problem. no sir, I have made some story, but it's really very difficult for me to explain as my right side is really very disturbed. Yeah. Okay. And it's No problem, Saira. You don't have to worry anything. All right. So it happens. It happens sometime with me. I'm unable to explain something and everything. Sometimes I become very fresh, so I express lots of things. ऐसा एक्चुअली ये माइग्रेन जो है ये मेरी हैबिचुअल हो चुकी हुई है, तो जब समटाइम्स बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है तो एक आई साइट थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो लिसनिंग में भी अभी मुझे काफी प्रॉब्लम आ रही है, सबका बोलना मुझे पसंद नहीं आ रहा, समटाइम्स हैंड्स फ्री उतार देती हूँ, समटाइम्स लगा सो No, it's a part of life. You don't have to worry anything about it. But just migraine, right? Lots of people are suffering from this kind of problem. I would like to take the medicine right now. Take some. The medicine is not the proper solution for migraine. I think I don't know what is the solution for migraine. As I am suffering from last 10 years from this. For this problem, no problem. I think it's a cause of having lots of stress. Many of the people they suffer from migraine problem in cold weather when they have lots of stress in their mind. So it's a kind of No, sir. It's not the problem of cold weather or hot weather. जब मर्जी इसका दिल कर पड़ता है. Okay, no problem then. Okay, guys, listen to me. You know, everyone spoke very well, but just for making a story, you'll have to think about there must be a fairy tale in your mind. Must be a great or broader thinking, broader area of spectrum in your mind, actually. Okay? But from the beginning, what you're supposed to do, you'll have to choose the word in this kind of the situation. हाँ शाकिर रह गए हो आप रह गए हो भाई, आप कर लो पहले, उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ. नहीं सर आप कर लें. अच्छा चलो मैं बताता हूँ. आपने एक वर्ड चूज करना है उसके अंदर. अब there were plenty of words, lots of words were in your vocabulary or you have written before. I was telling you, I told you everything about it. But what we're supposed to do, you have to choose for example, the best time which I enjoyed a lot and I suffered a lot, the time when I was in my university. Okay, for example, if you can ask about myself. So, I would like to start up everything. I would like to settle up or start up. I would like to make the story regarding my journey or my life. So, not from alpha or when I was kid. I will love to start from the time when I was in my university, right? So before starting, so you may quote something, okay? For example, Shakespeare said,
said, plagiarism is an occasional episode in the drama of life. Plagiarism is an occasional episode in the drama of life. So I had many of hurdles in my life, many of big tasks which I couldn't achieve, or some of the tasks I was achieved at that time. So I would like to start the time when I was in my university. Right? आपको समझ आ गई? अब मैंने आपको बताया कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मज़े से रिलेवेंट है, लेकिन शेक्सपियर ने ये कहा था कि प्लेजरिज्म इज़ एन ओकेजनल एपिसोड. जो आपकी खुशी है, आपका मज़ा है, अगर आप ज़िंदगी को ड्रामा लेते हैं तो उसके अंदर ओकेजनल एपिसोड, कभी कभार आने वाली एक आधी कोई किस्त होगी उस ड्रामा के अंदर जिसमें आप खुश होंगे. अदरवाइज everything is sorrow, or you may face different kind of problems or hurdles. Maybe you become stressful man, or the things are related with that. अब ये कोड से मैंने स्टार्ट किया तो एक एग्जामिनर के ऊपर इतना हैवी इंप्रेशन पड़ गया इसका, उसका मतलब लगा ये जब बोलने लगा है ना, ये आम बंदा नहीं है. ठीक है, मतलब इसने he is a bookworm, he is a kind of a person who read the book a lot, or the person who have some knowledge regarding that. ठीक है. अच्छा, उसके बाद फिर मैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ से चलूँगा. Then I would like to start. I had lots of plan when I was in my university. Lots of thinking, but the mind that was not matured enough. Different ideologies, too much creativeness, craziness, with full of feeling and with full of love. And I would also started my career at that time in an awesome way. In a nutshell, by having different kind of the circumstances. Let me tell you one more thing. I was not a keen student, a very good student in my university. I was just an ordinary student. But I was quite different because, I was so much creative. For example, I'm gonna tell you one thing. My teacher, once he assigned me a topic, not me, to all the class, a topic that you have to have put at least 2 to 3 ideologies or 2 new ideas which are not being implemented into the market, and you're gonna express that how you will love to entrepreneurship, have an entrepreneurship, how you will supposed to deal everything in it, or that you must have to think about it, that should be creative and you one. So all of my friends, they were failed to thought like that, but I made 26 ideas, different ideas which were not implemented in the market before. So the time when my teacher, he told me that he's not even the kind of person who is very, the top benchers, but he is an intelligent and he is so much creative. So from the time I decided to not to do the job ever in my life, when I was in my university. So I started my career. I took just the normal school. The first day after taking my degree, when I was on the road or into the market. So I was having plethora of ideologies in my mind, or very creative things or different things in my mind. Then I hit upon a plan that I have to start my own business by running an academy. Because I was a great speaker, I was the person who took first position the most in my presentation. My communication skills that were very good. So I was not having enough money for starting an entrepreneurship or just sole proprietorship. So I was thinking about to merge in any kind of academy or institute at that time. And meanwhile, one of my teacher, he told me that you do not have to put all of your eggs in one basket when I was studying.
So I also thought that I will not supposed to spend my 100,000 rupees on just one segment, on just one chunk. So I started my own business, which I was also running before when I was in ninth class. So I thought to put some more money in it. So I selected two of my friends, which were my best friends, as a second and third partners, right? And both of them, they were agreed to invest with my business. So there was kind of fairy tales. There were two businesses which were running together. Lots of, many of time we got failed and we didn't have, because we didn't have experience about that. I was not even the grade teacher at that time. So I couldn't hunt the customers or the student at that time. But I was keep struggling. The career was being started, and different ideologies came into my mind, and I put it all kind of the ideologies in my life. For example, about Taba stall in English, people they call it stall. I started many stalls in my life. Indirectly, for having the first benchers, I thought that I would love to communicate with the people in a very grassroots level, where the labor work. Although I was having 9 workers at that time, but I love to present in front desk. I love to communicate directly with my customer. So I made everything on my own. I knew about the experience about cooking, and because I also would like to start my own business as a would like to run my hotel, but that was different. So I couldn't fulfill that ideology because I didn't have the knowledge at that time, or I didn't have the experience, even though, but the ideology was different. I said one of my teacher when I was in my university that I would love to start the kind of a business where the fairy tales and the ghost or as a servant, they will exist and they will serve you everything. But by having the kind of there will be kind of the taboo, and they will be wearing different kind of the costumes at that time. So I had the plan, but I didn't start it. But because after spending some time, I have the experience about and opening a shop, and I was having the experience about running a farmhouse very gratefully. So one of my uncle, he told me that there is a shop which I'll have to give on rent. So if there will be any participant, any member, or any person who would like to take my shop as a rent, so you have to tell me or let me know that. He was in Saudi Arabia at that time. On the spot, I decided. I didn't take very much time. On the spot, I decided what should I have to. I said to my uncle, "Why wouldn't you like to give me your shop?" He said, "Okay, no problem." But the rent at that time was 9,000. I paid him 6,000 because obviously he was my uncle. He said me. He didn't say me yes. But my aunt, she was listening the phone or attending the phone at that time. She said, "Okay, no problem. So you have to give him because he is a very good guy. I think by having this opportunity, he will enhance his business or he will get well." Okay, he said, "Okay, they have to take." He also said me that I wouldn't like to take even single penny from your side, but why I'm taking, because I make yourself more responsible, so that's why the rent. I'm taking the rent from you. I said, okay. I started my own business, running this and that, the kind of the things, and I bought that specific shop. That was my success from my own uncle by having 4 million rupees. But after doing lots of things or plethora of different ideologies, I become fed up after spending some time. After having a long time period, I become fed. I wouldn't like to do. I really would like to enjoy my life because I'm also the kind of person who have lots of feelings regarding nature, everything. So I hit it upon a plan. Even my father, he told me, just you have to skip everything. You have to go with me to Umrah. I went there. What you said? I had Sorry, different. Yes, Saira. so it's your true story or just a tale?
It's a 100% true story. There is no fairy tales in it. There is no tale in it. Okay, this is Okay. 100%. Okay, right. Before going to get married with the girl, I went to the Umrah with my father. There was a kind of different spiritualities and felt many of the things there which I couldn't felt before. What I felt that, there was when I entered into the Makkah, and I felt that my, it was ruined, and I couldn't express that even. It was a kind of the feeling I couldn't even cry at that time. The time when I was, the thing became more horrible for me, and I was suffering from very great fear, and I couldn't express the time when I entered into the Makkah and I had such a feeling like that. Okay, then I go to the Medina. I would like to also share my experience. When I go to there was a Gumbad, as we people know that. When I saw that the green one first time, I was just walking and I cried instantly on the spot. I cried a lot, and I loved to reach to the point, to that specific point in an instant, in a minute. So I ran at that time, unconsciously. I don't know why I ran, but I ran. I ran very fastly. I went there, and my body was shivering at that time, and the route that was I always I recite the route. So I was having the road even at that time, but I couldn't express the feeling because I was feeling everything, the kind of spirituality, because Muhammad is a peace be upon him. He is the last messenger, and I am very near to him. That I got a chance at that time. I thought that I didn't have the time. I may have not in future. So, and different stories are related with that. I was suffering from the chirotic problem, and whenever I suffer from the pain, chest pain, I ran at that time to that specific place. I say directly to my messenger, peace be upon him, that I am suffering from this kind of problem. If you're going to do something for me, maybe this is most of the people equal this shirko, but this is not. This is my personal feeling. Can you imagine that on the spot, suddenly, on the spot, I didn't have any kind of feeling, like I didn't have any pain, or everything gone. I mean, God, I couldn't even express it. Can you see my hairs right now? Okay, I have I had very less hairs when I went to the Umrah. So I believe that there was water which is called Ab Zamzam. So I applied water many times on my head. I just keep it, and I applied more than 100 times in a day. आपको पता है वहाँ पे गंज करवा लेते हैं ना, तो क्या हुआ कि कुछ अर्से के बाद जब मेरे बाल आना शुरू हुए, what happened then? I said there was new roots which were coming on my hair, and I had lots of hairs at that time. अभी इस अर्से को काफी टाइम गुजर चुका हुआ. So spiritually, I was very strong at that time. When I came back, by having lots of spiritual things or this and that, when I came back to my home, I didn't have even a single penny, but few of the things which were not running properly. One of my parrot, which is called grey parrot, he laid first egg after 5 years. First day when I came to Pakistan, I said, oh my God, this is really a blessing for me. Then what I did I said, I prayed to my Almighty, yes, oh my God, this is good, great, and because of my spirituality, this and that. Actually, he laid 3 eggs, but all of 3 eggs were unfertile at that time. You know the cost of the baby? It's approximately 50,000 rupees. A baby, a chick baby, it could be cost 50,000 rupees. I lost my hope at that time. I said, oh my God, what happened?
I was expecting even 3 babies, 3 chicks from these breed. Right after 15 days, my bird he laid again, and this time there were 4 eggs, and all of them are fertile, and baby came out, and I sold all the babies. Right after 30 days, I took approximately 200,000 rupees at that time. So I cannot explain. Whatever we think we would like to achieve, the moral I'm gonna tell you, what we would like to achieve, we put all effort that I have to do this and that. Sometimes we can't, but sometimes we take much better than before. Whatever you think, Allah Almighty, He always thinks differently, and we think differently. We think according to the future planning. We think according to the circumstances whichever are going on. But the planning from Almighty side, it always different, and it's always, interesting. I personally observed that. So the belief on Allah Almighty at that time, that will become more stronger than right now I'm having. Before this time I'm having beer or kind of the things like simple jacket, t-shirt I wear. When I was going to the university, this is true story, this is not fake. I'm going to tell you. I was a kind of a person who loved to wear 3-piece all the time. I had approximately 38 3-piece suit or 2-piece, close collar in my cupboard, and I love to wear the 3 to 4 times, then no more than that. I just because I had the money at that time. But the time was changed, and I was becoming more simplest person. I don't know why, but everything will become changed after this incident. So this is the story, and you guys are taking interest to listen to me. So I have to, make this story like this, or I have to just explain everything, which should be very interesting for the people. Okay, it shouldn't be very longer. I took you approximately 20 minutes, but you have to squeeze it, or have to make it like more, shorter. In a 2 to 3 minutes, you'll love to explain everything wholeheartedly by having your feeling. If you'll do this, you will be a successful person into the future. If you'll not do this, you fulfill everything by having the, oh my god, this is a burden, this is the thing this is the task that Ayaz or Sarfazan has given to me, so I have to fulfill. So you can never enhance your knowledge, or maybe you will enhance, but not properly. So do everything whatever in your life. Even you would like to become a cobbler, so you must be a cobbler by having your full feeling, or you have to feel like, so I must be a cobbler, but you must be a different cobbler. Okay, so this is the kind of maybe that was, I didn't try to add some kind of phrases in it, or maybe idiomatical expressions, but that was interesting, I think. What do you say about it? Yeah, it was. Yeah, so what will you have to do? Always have to think positively, and try to grab the thing as maximum as you can. Try to enhance your knowledge, or make your thinking area broader. I need your broader sense. You have to think on a bigger, okay? Don't create the circle, or make the circle that I have to think everything from these 10 words, 20 words. No, you can even break the circle. You should be relevant. You can add something which should be more interesting. Yes, Shakir, go on offline. Shakir, can you hear me? No. Okay, guys, if you would like to ask any questions regarding today's lecture. Sir, you speak a word incented, right? So what Instead. does it mean? Instead. Okay, so you were explaining when I saw the Gumbat, I got incented. So
Shocked maybe, right? Instead. Instead. The word is instead. Instead. Okay. Maybe shocked. I guess you said at that instant. INSTANT. You said at that instant. हाँ मे बी मैंने ये कहा होगा इंस्टेंट नहीं कहा इंस्टेंट का होगा हाँ जी इंस्टेंट का होगा I didn't cram it so I didn't remember that what I said it Okay. instead or instant how many mistakes did I do at that time? I'm also a human. I can do plethora of mistakes. Yes, you are back. I So know that. sorry, I just saw only I just heard only one. One mistake. But you corrected it. I Yeah. corrected. I think you change. You said I run, and then you said I ran. Right. So you change it. Yeah, it's quite difficult to handle past indefinite, but they have to. Sir, one question. You Yeah. said I went to Umrah. Mhm. It should be I went to perform Umrah or I went for Umrah. That's my opinion, I guess. I went for performing Umrah. This is good, and went to Umrah. This is also there is no problem in it. Okay, so Right? we To can use perform. for and to both with the Umrah. Yeah. To Umrah, this is an obvious that if you are going to somewhere, that this is the things sometimes are hidden, but the things are obvious, right? So, for No, example, actually, like I am going to Lahore, but Umrah is not a place. I am going for. I'm going to Yes. school for studies. I'm going for studies. Yes, going That's for why I'm asking. yeah for performing you can say that, okay, for performing Umrah or Okay. or for maybe praying or for performing like that. For performing Umrah or Okay. went to Umrah, this is also the kind of the correct sentence because this is an obvious. The hidden sentence is an Okay. obvious that you would like to perform something in it. Okay, the things Okay. when it will Okay. become. For Got it. example, I'm gonna give you an example. For example, if I say you, ये मोबाइल है, मैं कहता हूँ ये मोबाइल है, ठीक है, तो अब इसकी अंग्रेजी में क्या करूँगा? दिस इज मोबाइल, नो दिस इज आ मोबाइल. आ इसमें ऑब्वियस है Yes. क्योंकि एक है ना, आ तो आर्टिकल आ हमें खुद ब खुद Yes. ही पता लग गया कि इसमें आ लगेगा क्योंकि एक मोबाइल की बात हो रही है. तो इस तरह कुछ चीज़ें हिडन होती हैं लेकिन आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. लेकिन ठीक है, परफॉर्मेंस Okay. अगर आपने उसको एज एक्शन लेना है तो परफॉर्मिंग उम्रा, यू कैन से दैट. Okay. Okay. Thank you. यश आके यो था. Yes, sir. Yotan, I said. Okay, sir. So, sir, well, I'm going to talk about the journey that we made back in 2017 with my friend. In 2017, in November, my friend came to me who was a crazy fan of the sweet science of boxing. He came to me and said, man, that Khan is fighting Canelo Alvarez. I was surprised at that time and said that he's moving. Is he really moving to weight up to the middleweight champion, a pound for pound king? He said, yes, you're right. And we are gonna watch that fight live in the Vegas. And I was, like I was surprised and said that how is that gonna be possible? He said that I just made the phone call to book the tickets, and they said that you will come tomorrow to get those tickets. So I went to the office and I, spent 2 or 3 years, and after that I got the ticket, and I texted to my friend that we are now finally going to the Vegas to watch Khan versus Canelo. So after the 2 weeks, we went through the flight, and when we reached there, and we went to the Vegas, and we booked a room in the MGM Grand, and after that we went to the fight arena that was the Madison Square Garden over there, and we went there, and the crowd was so amazing. All the Pakistani fans were and Pakistani British fans were waiting that Khan is going to knock out Canelo, but everyone is knowing, a real boxing fan was knowing that that's not going to happen because Canelo is a big dude who lands a lot of bombs on Khan, and he's going to land a lot of bombs on Khan. So everyone was knowing that.
So when Khan entered in the ring and they started fighting, there was there were a lot of doctors inside the ring and outside the ring. So when the fight started, Khan started very well. He threw a lot of combination with too much speed, like 10 or Mm. 20 punches in 2 seconds. So he used to throw a lot of punches, in the seventh round, he landed a big right hand from just behind his head, and it hurt Khan, and that was like a bomb. And Khan hit the ground like he's dead. And the doctors came inside, and they were shocked that Khan is not alive, but Khan was not in his senses. So they took him to the hospital. And after the fight, the time was to enjoy because I was on Canelo's side, and my friend was not fine at that time because he was, supporting the Khan. So we went to the hotel room, and I opened my cupboard and I took out my swimming suit and I went for swimming. And on the next day we went to the beach, and the weather was too hot there, and we enjoyed a lot in the Vegas because Vegas is the city that never sleep. And after that we came back to home. Mm. Okay, Shakir Khan, you can tell me what is the difference between kickboxing and boxing? I think kickboxing is more dangerous, isn't it? No, if I talk about kickboxing is dangerous because it is one of the deadliest sports on the planet. Like, it is also included in the combat sports. But the good thing about the boxing is that the boxing is much famous than it, because in the Europe people love to watch action. In boxing there's a big action, and there are good techniques, and the punching are landing so beautifully that everyone love boxing, and they prefer boxing more than that kickboxing and the mixed martial arts like UFC and battle. So they prefer boxing because the boxing is better and good, and in Mhm. this you get hurt a lot more than kickboxing. In kickboxing, it's just Right. like game, not a real punching. So the boxing is the different brutal breed. Okay, and tell me one more thing. I watched in many movies, right? Action movies. Lots of fighters. They select the fighting, or maybe there is a movie which is having the name Knockout, and other movie Creed, undisputed. I don't. undisputed Bioka. Bioka, yes. So is it real? Yeah. People will fight like this? Yeah, well, in real, Bayoka is not a fighter. He's like a star, a film actor, but he practiced a lot to become like a fighter, and he trained a lot and he went to the Vegas in the Mayweather's gym to train to learn more techniques about the boxing. So I think, in his interview that he told that he trained for the boxing 2 or 3 years for this movie to become like to show that he is fighting really real. So it takes time, because in the Hollywood the movies are well directed. So you have to show something. So you have to train for that. So Boyka trained hard for that, and he presented it very well. So that film is very Hmm. good. So I mean that is The fake. movie is Even in awesome. the real life, it doesn't exist in real life. Yeah, that is fake. That is fake. Okay, Yeah, everybody knows that movies are fake. really. Yeah. So that is They fake. are just Because performing the stunts. yeah, the performance. In bloodbathing. There is also a movie like Blood and Yeah. Bath, whatever. The kind of the movie, but they show something like street fighters. They are very good, and the people they put the money on them, and they earn the money by fighting this. I mean, they may be You there should on. watch the Creed 1 and Creed 2, which is just released, and it's an awesome movie because in Creed, Tony Bellew, who is the lightweight champion in real boxing, he is fighting with the hero of that, and that movie is very interesting. Okay, I watch it. What is the name? Creed. Creed, Creed. Creed. Creed, CREED. 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 Yes. Okay. But Okay. you can watch the new part too. Part two, or I'll have to watch part one then part two. Okay, students. Thank you for taking my class. See you tomorrow, inshallah.
And pray for my test, sir. Oh, you don't have to worry. Boy. I Just have only few days. okay, no problem. You don't have to worry anything about this. Be like a sportsman. You're gonna present everything. Don't. You shouldn't be the girlish way. Okay. Be a boy. Okay, sir. Okay, Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Have Hafiz. nightmares. Yes, I have nightmare too.